Good morning and welcome. So it's 10 o'clock by my watch, but my computer की watch दिखा रही है कि अभी 3 minutes है. So shall we wait for another 3 minutes for others to join? And then we join? And in the meantime, if you want, you can just share your name and place from where you're joined. You can just unmute yourself and speak. Yeah, Rashmi, where have you joined from? Hi, I'm Reshmi from Mumbai. Okay, Rashmi, welcome. Welcome, Rashmi. Thank you. Yeah. Hi, Antara. Hello, ma'am. Good morning. How are you? Good to see you after such a long time. Yes. I am also very happy, Yeah. and I was really looking forward to you to attend this session. So finally, I got an opportunity. So I'm really happy, and I really look forward to this session. Thank you so much for joining in. Thank you so much. Yeah, my pleasure, ma'am. It's always a pleasure to attend your sessions. Thank you. Thank you for your kind words. you people, when you participate, make it worth it. No, I really wanted, ma'am. Since a long time, I was really craving to attend your classes because sometimes we also need some boost, which is the tagline of our today's Yeah. True. That's right. discussion. Yeah. So we all need this boost some point or the other because I have. I'll just gradually I'll share what I have got. Yeah. By attending how I have felt over the time by Sure. attending the sessions. I will share, ma'am, later. Yeah, we'll definitely give you opportunity to do that. And just for your information, I'm going to start the magic sessions soon again, so we can be together again. Yeah. Okay. Hi, Vanita. Good morning. Hi. I don't know if you can hear me. I can hear you. I can hear you. I can see you. And I it's can. such a wonderful to see you. In the morning. No, it's so nice to see you. All of you are looking so nice. Like now I can see Geeta, Antra, and you only at the moment. Yeah, Since only I'm on my phone and Because our videos are on, I guess, इसीलिए. yeah, that's right. I'm not so nice to see you. Okay. So I think it's time to begin now. So let's welcome everybody. So welcome. Yes. So welcome, and I am so happy that finally I'm getting to see all of you, such beautiful people. First thing in the morning, not first thing, मतलब बाहर नहीं निकले हैं तो first thing ही हो गया. So I really want to acknowledge each one of you. बिकॉज हम सब लोग कॉन्फिडेंस की बात करते रहते हैं यार, वहां पे ना मुझे अजीब सा लग रहा था, लोग इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे और मैं ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पर्सन वाज सो नाइसली ड्रेस्ड अप एंड ऑल, एंड आई वाज ट्राइंग टू शाई अवे और हाइड समवेयर. तो ये सब चीजें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली वांट टू टेक एक्शन एंड नो कहाँ हम क्या मिस कर रहे हैं और उसको हम कैसे enhance कर सकते हैं, improve कर सकते हैं. So I really want to acknowledge each one of you for taking out time on a Saturday to be in this session, because आप कुछ भी कर सकते थे ना, Saturday morning है, and relaxed हो सकते थे, घर का कुछ काम कर सकते थे, बाहर जा सकते थे, because you have committed these 2 hours for your own self, जो हम बहुत rarely करते हैं. We have so many roles to perform and we are always donning different hats and doing different work. Kabhi wife banke, kabhi mother banke, kabhi employee banke, kabhi sister banke, kabhi neighbor banke, kuch na kuch hum दूसरों के लिए कर रहे होते हैं. It's very rare that we think about ourselves and we take out time for ourselves, and this is what you have done, and I really want to acknowledge you for that. So thank you so much for taking that time out for your own self. Yeah. So today's session is all about confidence. And confidence के बारे में मैं आपको कुछ steps बताऊंगी, उसको कैसे हम boost कर सकते हैं, enhance कर सकते हैं.
Before that, I just wanted to set certain rules. थोड़े से रूल्स बना लेते हैं ना, ताकि हमारा ये प्रोग्राम जो है इसकी वर्केबिलिटी बनी रहे, right? So whoever can switch on their videos, I would highly recommend, please switch on your videos. It will help you to grasp better, stay focused, and it will give me energy. When I see people on the screen, I feel so much of energy which starts flowing towards me. Otherwise, वो एक screen के ऊपर बात करना is not all that easy, right? Secondly, switch off your phone. If not want to switch it off, put it on silent or put it on aircraft mode. Because वो बीच में notifications बजते रहेंगे और आप distract होते रहेंगे. Since you have taken out time for yourself, devote it fully to yourself, right? और एक और बात, because मौसम चेंज हो रहा है तो पानी की जरूरत पड़ेगी. So keep a bottle of water with you to keep yourself hydrated. अगर नहीं है तो अभी ला के रख लीजिए before we start the session, so that you have water to drink. Because मौसम चेंज हो रहा है और 2 घंटे जब आप बैठेंगे तो प्यास लगेगी भी, right? और प्यास को अवॉइड भी नहीं करना चाहिए. So keep yourself hydrated, keep water next to you so that you keep sipping it, right? आज के सेशन में मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शेयर करने वाली, जो आपके काम आने वाली हैं. तो मेरी रिकमेंडेशन है, नोटबुक और पेन लेके बैठिए. नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए, सो दैट जो भी पॉइंट्स आपको क्लिक करते हैं, पॉइंट्स तो सारे ही लिखने वाले हैं, बट जो आपको लगता है कि आपको उसकी ज्यादा जरूरत है. एंड मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी देने वाली हूँ, सेशन में भी और सेशन के बाद के लिए भी. तो जो सेशन में एक्सरसाइज करनी है वो लिखने वाली है. तो इसलिए इट्स बेटर दैट यू गेट होल्ड ऑफ अ नोटबुक एंड अ पेन, राइट? अगर नहीं है तो जस्ट गो ग्रैब इट एंड ब्रिंग इट बैक, कम एंड सिट बैक. ओके, तो अभी ये हो गया हमारे रूल्स. नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड, आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, सो लेट मी गिव अ लिटिल बिट ऑफ माय इंट्रोडक्शन. हु एम आई? वैसे मैंने ग्रुप में भी शेयर, कुछ लोगों ने शायद वो भी नहीं देखा होगा, so just wanted to share it. So my name is Dr. Jagjit KD. I'm an internationally certified coach. मेरा 40 साल corporate world का experience है, where I have worked with companies like HCL, Pepsi, Honda, and my last job was with Tata Communications. And I worked with C-suite. You know what is C-suite? मतलब CEO level के लोगों के साथ मैंने काम किया है throughout my life. तो बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे भी. And then other than that, 10 साल मैंने I worked in the domain of personal transformation. So there's a organization called Landmark Worldwide. I was associated with them for 10 years. And वहाँ से मैंने ontology सीखी, and I learned how to contribute in other people's life. And that is where I got my ikigai. वहाँ मुझे समझ आया मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. And my life's purpose is to empower people so that they are able to live satisfied and fulfilled life. And that is what I'm doing. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं वो सब कर रही हूँ. And I'm a graduate from Delhi University and postgraduate from IIM Lucknow. And इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे मेंटर्स एंड कोचेस से कोचिंग ली है, और अभी भी ले रही हूँ, बिकॉज वी ऑल नीड कोचेस एंड मेंटर्स. हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, राइट? My age is 62 years of, I'm 62 years old. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने 62 सावन देखे. इसका मतलब मैंने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है. क्योंकि जो जिंदगी की किताब सिखाती है ना, वो और कोई किताब नहीं सिखाती है. तो मैंने जिंदगी की किताब से बहुत कुछ सीखा है, जो मैं लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, ताकि उनको जिंदगी में अगर ऐसी सिचुएशंस आए तो वो उसमें से किस तरह से बेहतर तरीके से निकल सके. सो दैट इज अबाउट मी. आई एम सिंगल, आई स्टे इन दिल्ली. दैट इज माय इंट्रोडक्शन. अब मेरे को भी ना कॉन्फिडेंस की, मुझे आई ऑलवेज यूज्ड टू कम अक्रॉस एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन फ्रॉम माय, यू नो, फ्रॉम माय, आई वुड से फ्रॉम माय वर्क करियर. जब से मैंने स्टार्ट किया, आई ऑलवेज केम अक्रॉस एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, बहुत जगह पे नहीं थी, और बहुत जगह पे मैं छुपती थी लोगों से. कहीं ना कहीं
लोगों के पीछे खड़े हो जाती थी कि मुझे कोई देखे नहीं, कि मुझे कुछ बोलना नहीं पड़े, या मैं इस तरह से ड्रेस्ड अप नहीं हूँ कि लोग मतलब मैं उनके सामने आऊं। तो हम सबको ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ है, एंड विच इज नॉर्मल, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। हम कुछ सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं, जो भी आपकी एज है, आपने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ से, और बहुत कुछ अभी सीख रहे हैं। हमें जिंदगी हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रही है और हम सीख रहे हैं, राइट? सो सिमिलरली आज हम जो बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल, जिसको ना बिल्ड करना पड़ता है। जब हम जिम जाते हैं तो मसल्स बनाने के लिए जाते हैं ना, तो एक दिन में तो बनते नहीं है, तो वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट। तो एक छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लेना शुरू करते हो तो धीरे 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 वो मसल बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वेर एवर यू आर टूडे, start taking small steps to build that muscle of confidence. So that is all about the session and the introduction. आज हम 7 steps के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। और उसमें अवेयरनेस जो है ना, सबसे बड़ी बात वो है अवेयरनेस। जब आपको ये पॉइंट्स पता चलेंगे ना, तो आप अपने आप को चेक कर पाएंगे हर टाइम पे कि आप कहाँ पर ऐसी सिचुएशन फेस कर रही हैं और कहाँ पे आपको क्या करना है, राइट? तो इसीलिए बोल रही हूँ नोटबुक एंड पेन जरूर रखिएगा एंड कीप राइटिंग, राइट? वेलकम सपना, एंड लेट्स स्टार्ट। सो आई वांट टू स्टार्ट विद अ स्मॉल एक्सरसाइज। अब आप बोलोगे शुरू शुरू में एक्सरसाइज करा दी, ओके, वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू इज अपने कंधों को ऐसे झुका लो, जैसे स्लाउच करते हैं, ऐसे करके बैठ, या एंड बाजू ऐसे कर लो, एवरीबॉडी डू दैट, और सर नीचे करो। Close your eyes and just imagine you are addressing a group of 7 to 8 people or 9 to 10 people. आप कुछ लोगों के बीच में खड़े हैं और आप कुछ उनको एड्रेस करें, उनसे कुछ बात करें इस तरह से। आप झुके हुए कंधों के साथ हैं, आपकी बाहें जो हैं वो क्लोज्ड हैं, आपका सर थोड़ा सा झुका हुआ है। जस्ट बी देयर फॉर अ सेकेंड एन एक्सपीरियंस। अगर आप इस तरह से खड़े होकर लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कहाँ है? जस्ट नोटिस इट। Now open your eyes, sit with your spine straight, roll back your shoulders, ऐसे कर roll back your shoulders, straighten them, look up, chin up करें थोड़ा सा ऐसे करके, look up, smile, close your eyes, take 3 deep breaths. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale again. Now imagine you are addressing those people once again. वो 7-8 लोग, 9-10 लोग जिनको भी आप एड्रेस कर रहे हो, and you are addressing them now. Just imagine you're doing that. Now check your confidence level on 1 to 10. अभी कहाँ पर है? Open your eyes. I want you to share.
You want to write it in the chat? You want to unmute and speak? Let me know. What was it first time and what was it second time? Yeah, Antara. Can you hear me? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. I've written in the chat box actually. Okay. So I'm not able to see chat box. I would prefer if you could just unmute and speak, because we are very limited people, so it's okay. Yeah. Yeah, Antara. Ma'am, first time it was around 1.5. And second time it was like around 7, 8. Okay, great. Yeah. Who else would like to share? Almas? Yes, ma'am. Same here. First time confidence level was low, like 1 to 2. And then when you put your shoulders back and when you're speaking to the audience directly with eye contact, then your confidence level goes to 8, 9, like that. Great. What about you, Sapna? Would you like to share? Okay. So, Colonel Saab, would you like to share? Yes. Actually, when your posture and your profile in front of the people are so, you see, disoriented, naturally your motivation level is just 0 to 2. But the moment you are smiling and you are looking into the eyes and you are standing up and your chest out, and I'm sure it is 7 to 8. Yeah. Great. Thank you so much. So this is called that physiology impacts our confidence. So next time, whenever you are feeling that you are lacking confidence, just check your posture. Instantly, it will give boost to your confidence. So this was tip number 1. Step number 1, physiology impacts our confidence level. तो जब भी आपको लगे आप कहीं लोगों के बीच में है, सोशल गैदरिंग्स में है या कहीं पर है, check your posture. The moment you correct your posture, आपका confidence level immediately increase हो जाएगा, enhance हो जाएगा, right? So now I'm going to talk about step number 2. Stop comparing yourself. हम हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं. कहते हैं ना वो उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे. So similarly हम लाइफ में भी यही कहते रहते हैं कि उसका बोलने का ढंग कितना अच्छा है, मुझे बोलना ही नहीं आता. उसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है, उसने घर कितना अच्छा रखा हुआ है, उसके बच्चे कितने वेल मैनर्ड है. तो हम हमेशा ना कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप. और बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, तो मतलब इट इज सो इजी टू फॉल इन दिस ट्रैप, क्योंकि हम सारा टाइम तो इंस्टा पे होते हैं. किसकी ड्रेस कैसी है, वो कैसा लग रहा है, वो कैसे बोल रहा है, कहाँ गया हुआ है, कहाँ घूम रहा है. So always trying to compare with others. But you know what? जब हम इन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, हम उनकी लाइफ का सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे होते हैं. लाइफ तो एक एस्पेक्ट नहीं होती है ना. इट्स बहुत सारी चीजों को मिला के लाइफ बनती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिला के लाइफ बनती है. अब हम उनको कौन सा एस्पेक्ट देख रहे होते हैं जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं, जो हमें दिखाना चाहते हैं. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, जो आजकल इतना इम्पैक्ट कर रहा है हम सबको. तो लोग वही दिखाना चाहते हैं जो उनका बेस्ट है, और हम उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि अरे ये तो इतने अच्छा है, इसकी ड्रेस कितनी अच्छी है, या इसका बोलने का स्टाइल कितना अच्छा है, इसका ये चीज कितनी अच्छी है. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कंपेयर विद वन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. और हम कंपेयर किससे कर रहे होते हैं? अपनी कंप्लीट लाइफ. Because we know about our good, bad, ugly, everything about ourselves.
हमें अपनी वीकनेसेस भी पता है, हमें अपने फेलियर्स भी पता है, और हम इन सब के साथ अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हैं? वन पार्ट और वन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. तो आपको क्या लगता है, आर यू एबल टू विन दिस गेम? क्या आप ये कभी गेम जीत सकते हैं? आई डोंट थिंक यू कैन एवर विन दिस गेम, बिकॉज फेयर गेम ही नहीं है. पर हमें ये चीज समझ ही नहीं आती है. उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है which are not working, which are they have their own weaknesses, they have their own failures, but we don't know. Everybody is fighting their own battles. सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, पर हमें दिखाई नहीं देता. हमें उनकी सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है, और हम उस सक्सेस से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. But they have gone through so much before reaching that, and are still going through so many things in their life. I know a friend of mine who's very like she's like a celebrity, और लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती है. मतलब उसकी बहुत पोस्ट आती रहती हैं, एंड शोइंग सारे फोरम्स पे है, वो सारे बड़े बड़े फंक्शंस पे है एंड ऑल. बट आई नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू इन हर पर्सनल लाइफ. आई नो द काइंड ऑफ स्ट्रगल शी इज गोइंग थ्रू विद हर चिल्ड्रन. तो मुझे पता है कि वो कहाँ से निकल रही है, बट लोगों को क्या दिखता है? वही सब जो हम वो दिखाना चाह रही है. सिमिलरली हम लोग भी वही देख रहे हैं जो लोग हमें दिखाना चाह रहे हैं, और कंपेयर किससे कर रहे हैं? अपने पूरी इम्परफेक्शन के साथ. तो उनकी जिंदगी में भी सब कुछ नहीं है. कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता. सब कुछ नहीं मिलता है. Yeah. So whenever you're comparing yourself, always think about it that you are comparing with one aspect and not with the complete person. जो उनकी लाइफ है उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं आप. You can get inspired by them. You can get inspiration from them. But comparing is something which will pull you down, which will bring your self-esteem down. And embrace your imperfection. आप जैसे हो अपने आप को embrace करो, अपनी limitations के साथ, अपनी weaknesses के साथ. Yeah, and take inspiration from others and move forward. Does it make sense? Yes, ma'am. Okay, so I want you to find out who are these people who you admire. Pick 3 people and write it in your notebook right now. वो 3 लोग कौन हैं जिनको आप एडमायर करते हो, जिनको देख के आपको लगता काश मैं भी ऐसी होती, काश मैं भी ऐसा होता. Getting inspiration from them. Comparison आ रहा है, but inspiration भी आ रहा है. So I want you to write 3 such names. वो कौन 3 लोग हैं? सोशल मीडिया से हो सकते हैं, आपकी लाइफ में से हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में से हो सकते हैं. Now write down what is it that you admire in them. What is that quality you admire in them? Now visualize yourself 1 year from now. How do you want to see yourself? Write 50 words on it.
जो क्वालिटीज आपने उनमें एडमायर की and you're getting inspired by them, 1 year from now, just imagine how would you like to see yourself? Just write around 50 words on that. And this is for you. You don't have to share it with anybody. I'm not going to ask you to share it. So don't worry. You can write whatever you want. And guys, keep hydrating yourself. Huh? Vanita, can you go on mute, please? There's a noise Okay, coming. I'm not. One sec. वो कौन सी क्वालिटीज हैं अगर वो आप में आ जाएं तो आपको कैसा लगेगा? 1 साल में आप किस तरह के इंसान होंगे? हाउ वुड यू अपीयर? आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होगी? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? How would you carry yourself? How would you walk? How would you be interacting with people? कुछ लोगों को होता है कि मेरी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है. अगर वैसी लैंग्वेज आपके पास आ जाए, how would you be finding yourself, articulating yourself and interacting with people? आज मौका मिला है, लिख लो, क्योंकि हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं है. सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं और इंस्पायर ऑ में होते रहते हैं. वाओ, दैट पर्सन इज सो ऑसम. कभी सोचा नहीं हम भी हो सकते हैं. सो हो सकते हैं. Give me thumbs up once you've done. Start finishing if not done. 50 words लिखने हैं सिर्फ. 50 to 60 words. ऐसे नहीं लिखना है. एक तो most of us have not been in the habit of writing things, no?
what would you look like? How would you feel? Good, Antara. Start finishing, start finishing. We have a lot to cover. Give me thumbs up once you're finished. Ma'am, can I speak? Yeah, please go ahead. First of all, before I start with anything, I would do a self-talk with myself. I love myself. I'm fabulous. I admire myself, and that is just to boost up my confidence level. Of course, I would feel like a queen and would look more adorable in the attire and be on top of the world, address the audience with more confidence, and that is how I would feel if I'm on the podium. Great. Thank you so much for sharing. Okay, let's move on. If you're not finished, you can do it later, but you know exactly what to do now. Okay. So step number 3. Stop criticizing yourself. How many of you think that we always criticize ourselves? Do we criticize ourselves or we are happy with the way we are? Yeah, recently I was not too good with my health. So actually, after a long time, like 25 years, I must have fallen sick 4 to 5 days on bed totally. Today, I'm sitting up with a great confidence. And, actually, I was feeling so sick. I was criticizing कि why I fell sick. Everything was going for a toss. Like घर का main member अगर बीमार पड़ जाता है तो how does it feel? So I was feeling very low, very Yeah, low. No get that. energy, nothing. Get that. I wish you a very speedy recovery and jaldi se theek ho jao. And Yeah, you looking quite pulled down today. thank you. Yeah, yeah. Just take care of yourself. Okay. So other than that, what are the other ways we criticize ourselves? Anybody wants to share? हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होती है? मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत ढीली हूं काम करने में, आई एम लेजी, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, मुझे तो घर संभालना नहीं आता, मेरा घर लोग कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरे को ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मेरे पे कोई कपड़ा सूट नहीं करता. दिस इज अ वेरी कॉमन वन. एग्री विद मी और नॉट? आज मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा, पफी लग रहा है, my hair needs to be taken care of. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अपने आप को क्या कर रहे होते हैं? क्रिटिसाइज. बहुत कम होता है कि हमें लगे हाँ आज मैं अच्छी लग रही हूँ या feeling good about myself. Most of the time we are always criticizing ourselves. जब हम criticize करते हैं तो क्या करते हैं? We are basically doing negative affirmations. What are affirmations? Series of dialogues, thoughts and dialogues which we keep talking to our own self. किसी और को नहीं बोल रहे होते, अपने आप से बोल रहे होते. किसी की बुराई करते हैं ना हम, एक बार करेंगे, 2 बार करके छोड़ देते हैं, पर अपनी बुराई हम पूरा दिन करते हैं, किसी ना किसी बात पे करते हैं. और ये बाय डिफॉल्ट होता है, हम सोच समझ के नहीं कर रहे होते हैं, बट वी आर डूइंग दैट. या आई मीन just before the session I'm saying अरे मेरे बाल ही नहीं अच्छे लग रहे हैं, small things like that. But what is happening? Negative affirmations we are doing. So negative affirmations हम बार बार करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक chain
क्रिएट कर देते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके न्यूरो पाथवेज बना देते हैं। अ ब्रेन हैज न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसमें क्या होता है, जो थॉट को हम बार बार सोचते हैं उसके एक पाथवे बन जाता है विच इज कॉल्ड न्यूरो पाथवेज, और वो हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है उसकी। एवरी टाइम समथिंग सिमिलर हैपेंस, ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, और हम ऑटोमेटिकली वो सब कहना शुरू हो जाते हैं। फिर से सोचना नहीं पड़ता हमें, उसी टाइम हो जाता है। कितनी बार ऐसे होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लो आप रेगुलरली कहीं जाती हैं, मान लो यू गोइंग टू वर्क, यू गोइंग टू ड्रॉप योर चाइल्ड, एंड आप जितनी रोज उसी रास्ते से जा रहे हैं, पर आप कुछ अपने ध्यान में है, कुछ सोच नहीं है, और आपको पता भी नहीं चला आप कब पहुंच गए। आपने कोई लैंडमार्क रजिस्टर ही नहीं किया रास्ते में। ऐसा कैसे हुआ? इट इज बिकॉज इट इज प्रोग्राम्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं अपने माइंड में, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। एनी सिमिलर सिचुएशन, ऑटोमेटिक रिएक्शन। जब हमने एक बार कभी आग में हाथ जलाया होगा, तो अब जब भी हम आग के पास जाते हैं तो पहले से ही हम चेतावनी आ जाती है ना हमारे दिमाग से कि पीछे हो जाओ, आग है। कैसे होता है? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो नेगेटिव अफर्मेशंस बन जाती हैं हमारे लिए। तो अब करना क्या है? एवरी टाइम यू आर सेइंग समथिंग, यू हैव टू कैच योरसेल्फ। या ना बहुत काम करना है अपने ऊपर। हम लोगों ने ना अपने ऊपर काम कभी किया नहीं है। जो थोड़ा बहुत किया होगा, बट हम लोग ना वी शाई अवे फ्रॉम डूइंग वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ। परिवार के लिए सारा काम कर लेंगे, ऑफिस के लिए सारा काम कर लेंगे, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट टास्क लगता है, पर करना चाहिए, क्योंकि करेंगे तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज दुनिया हमें सुनाती रहती है, हम लोगों की बातें सुनते रहते हैं, लगता है हमें क्यों सुनाते रहते हैं, कोशिश करते हैं बदलने की, नहीं बदल पाते, तक अंदर से नहीं आएगा। क्या? तो अंदर से आने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को अंदर से झांकना पड़ता है ना? तो अंदर झांकने के लिए क्या करना है? आपको एवरी टाइम यू आर अबाउट टू क्रिटिसाइज, बहुत बार होगा पता भी नहीं चलेगा, बहुत बार होगा कि आप कब बोल गए आपको पता भी नहीं चलेगा, बट तब भी पता चल जाए जैसे ही बोलने लगो। जस्ट चेक योरसेल्फ। अगर आप कहते हो रहते हो कि आई एम लेजी, और आई एम नॉट स्मार्ट, और आई एम नॉट इंटेलिजेंट, या और आई एम टू ओल्ड, जो भी आप बोलते रहते हो ना, उसको सिर्फ आपने क्या करना है? थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इफ यू से आई एम लेजी, यार मेरे से नहीं होता, कौन उठेगा, आई एम टू लेजी, बोलते रहते ना, आई एम फीलिंग टू लेजी टू गेट अप। तो जब हम ये बोल रहे हैं ना अपने आप को, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है? लेजी, लेजी। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये कॉन्स्टेंट डायलॉग जाता रहता है ना, इट शेप्स आवर बिहेवियर, इट एक्चुअली शेप्स आवर बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंगली ही ट्रिगर होता रहता है, हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंगली ही शेप अप होता रहता है। जब आप बार बार अपने आप को बोल रहे हैं आई एम टू लेजी, यार आई एम फीलिंग टू लेजी टू गेट अप, तो आपका उठने का मन करेगा ही नहीं, आपका शरीर जवाब देगा, आप उठ ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, करना चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड ने बोल दिया आप लेजी हो, राइट? तो उसको आपने कैसे रिप्रोग्राम करना है? तो उसके ऊपर आई हैव अ फुल प्रोग्राम ऑफ 3-4 days, rewire your mind. तो आई जस्ट गिविंग यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ इट कि करना क्या है। तो जैसे ही आप ये बोलना शुरू करते हैं आई एम लेजी, और आई एम नॉट, आई एम स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट, आपको क्या बोलना है वहां पे? जब भी आप पकड़ पाओ अपने आप को, क्योंकि हर बार नहीं पकड़ पाओगे, आई एग्री विद इट, जब भी पकड़ पाओ आपने क्या बोलना है? आई वॉज लेजी टिल नाउ। क्या बोलना है? आई वॉज लेजी टिल नाउ, मैं अब तक लेजी थी, या आई वॉज नॉट स्मार्ट टिल नाउ। इससे पहले कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएं, आप यू कैन स्टार्ट विद डूइंग दिस।
कि जब भी आप ये बोलने लगो, जो भी नेगेटिव थिंग अपने बारे में बोलने लगो, आई एम वेरी फैट और आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई वॉज नॉट लुकिंग गुड टिल नाउ, और जैसे ही आप ये बोलोगे ना, आपको एक्शन दिखेगा कि फटाफट तैयार हो जाऊं दोबारा से। या इफ यू फील दैट आई वाज फैट टिल नाउ, तो आपको एक्शन की ओपनिंग दिखेगी। आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माय वॉक, मुझे वॉक पे जाना शुरू करना है। तो ओपनिंग दिखेगी आपको किसके लिए? नए बिहेवियर के लिए। एंड व्हाट विल दैट डू विद योर कॉन्फिडेंस? जब आपका नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कम होता जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैच योरसेल्फ कि आप नेगेटिव कॉन्वर्सेशन अपने बारे में क्या कर रहे हो, सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो, इनर क्रिटिक आपका क्या बोल रहा है आपके बारे में। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो यू विल बी एबल टू इसको आप वहां से चेंज करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर नेगेटिव को भी वहीं पर अरेस्ट करके उसको टिल नाउ करके बोलना है, ताकि आपको कोई एक्शन दिखना शुरू हो जाए। Yeah? So this was tip number 3. So now we are going to talk about हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो हमें बहुत पुल डाउन कर देते हैं। कि आप नेगेटिव सोच रहे होते हो, yeah, when you're blaming somebody, you're criticizing somebody, or you're complaining about something, तो क्या होता है हमारा उस टाइम पे? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है। अभी तक हमने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट हमने मैजिक बुक में तो यही पढ़ा है कि जो इमोशंस होते हैं या वो दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और हमारा एक फीलिंग चार्ट भी होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि हम कौन से स्फीयर में है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। बट साइंटिफिक लेवल पे देयर आर 2 other levels of emotions. One is shallow emotion, the other is deep emotion. अब ये shallow emotion क्या होता है और deep emotion क्या होता है? जब हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं तो वो हमारे डीपर लेवल पे चला जाता है, वो हमारे डीपर लेवल पे चला जाता है। और जिसको हम बहुत कम बोलते हैं वो सिर्फ सरफेस लेवल पे रह के निकल जाता है। अभी मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। When you ask somebody, how are you? Simple answer is, I'm fine, which is a positive one, right? Positive के लिए हमने क्या बोला? एक सेंटेंस। क्या ये डीपर जाएगा? No, because हमने उसको उतना पावर ही नहीं दी है। Now, if somebody ask कि आज क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यार पूछ मत, सुबह से माइग्रेन हो रहा है, जब से उठी हूँ सर में दर्द हो रहा है, एंड थ्रॉबिंग, मैंने चाय भी पी ली, मिग्रेन भी खा ली, सोने की भी कोशिश करी, बट ये जा ही नहीं रहा है, मैं तंग आ गई हूँ। कितनी बार बोला हमने इस चीज को? इतना एम्फसाइज करके 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटेंसेस में बोलते हैं। जितना हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, जितना हम उसको बार बार बोल रहे हैं, जितने वर्ड्स, जितने सेंटेंसेस में उसको बोल रहे हैं, उतना वो डीपर जा रहा है, उतना वो डीपर जा रहा है। सो हाउ टू फाइंड आउट कि क्या डीपर जा रहा है क्या नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑलवेज द नेगेटिव वंस व्हिच आर गोइंग डीपर, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उसी के बारे में बात करते हैं जो हमें परेशान कर रही होती है चीज। If I ask Almas right now, she will tell me at least about her health in 10 to 11 sentences. कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे ये हो गया था, मैं बेड पे थी, मुझे डॉक्टर ने ये बोला था, मैं बहुत परेशान हो गई, मैं I've been feeling so low, I've not been able to get up from the bed. It's the first time in 25 years I've not been able to get up from the bed. अभी इतनी बार बोला तो कहाँ गया वो? Yes, ma'am. It went Very true. deeper. It went deeper. मैम पता है हम मैंने तो कल क्या पॉजिटिव का किया? सॉरी मैंने
sorry to interrupt, yesterday. Then when I realized I'm saying so many times to so many people that I'm not well, and then I realized, then I switched. I'm fit and healthy, and in fact, I'm feeling good now at least. So I switched. I'm fit and healthy. Yeah. Yeah. But see, you have that awareness, you could do that. But it took you some time to get that awareness back. Yeah, because जो पॉजिटिव चीजें होती है ना हमारी, उसको हम क्या करते हैं, इफ वी डू समथिंग गुड, हम अपनी ना विंस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. वी डोंट सेलिब्रेट आवर विंस. वी जस्ट से अच्छा ठीक है, अच्छा हो गया, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ग्रेट यार, यू हैव डन वेरी वेल. उसके बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोल. उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, बट नेगेटिव के बारे में बार बार बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी की अपने हस्बैंड से आज सुबह चिक चिक हो गई किसी बात पे, दैट पर्सन विल कीप रीलिविंग इट. उन्होंने ऐसे कह कैसे दिया मुझे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मतलब ये कोई बात होती है, इस बात के ऊपर उन्होंने मुझे इतना सुना दिया. एंड यू आर रीलिविंग दैट अगेन एंड अगेन इन योर माइंड. एंड फ्रेंड का फोन आ गया तो उसको बता दिया, यार पूछ मत, आज तो मेरा दिमाग खराब है. यार इन्होंने मुझे सुबह सुबह इतना कुछ सुना दिया, मैंने क्या कहा था, कुछ भी नहीं कहा था, मतलब कहीं और की गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया. ये कोई बात होती है? मैं क्या पंचिंग बैग हूं? क्या किया आपने? One incident which happened, you gave so much power to it, and it went deeper, deeper, deeper. Do you think when you are talking about it, when you're living it, you're feeling confident? आपका सेल्फ एस्टीम ऊपर जा रही है? It's not. It is impacting your confidence. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, यार मैं अच्छी पत्नी हूं भी कि नहीं हूं. So what are you supposed to do? सिंपल है, जब भी किसी को मिलो, कुछ अच्छा लगता है अपने बारे में, किसी के बारे में, उसको 5 sentences में बोलना है. For example, you go for a party and you see somebody who's wearing a sari. मतलब उसको जितना अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो ना, आपने उसको बोलना, वाओ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रिंट, द फ्लोरल कलर्स आर सो वाइब्रेंट, लुक एट द टेक्सचर, हाथ लगाते हैं ऐसा लगता है स्किन पे कितनी सॉफ्ट लग रही है ना. एंड इट्स अ सत्य बोलना, आई नो दे मेक सच ब्यूटीफुल साड़ीज एंड ऑल. आपने क्या किया? आपने एक सिंपल सेंटेंस को कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, आपने उसको क्या किया? आपने उसको बढ़ाया, उस वाइब्रेशन को बढ़ाया, ताकि वो पॉजिटिव जो है ना वो डीपर जाए. एंड एवरी टाइम यू आर एक्नॉलेजिंग अदर्स, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. उसका दिन बन रहा है, आपका भी दिन बन रहा है साथ साथ, बिकॉज यू आर expressing yourself with so much of love and affection and appreciation of that person. हम किसी के घर जाते हैं, किसी ने खाना बनाया, हमें उसकी एक पर्टिकुलर डिश बड़ी पसंद आती है, हम ना सिर्फ एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं कितनी टेस्टी बनी है ना, अच्छी बनी है, एक हेल्पिंग और ले लेती हूँ. दैट्स ऑल वी डू. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू टेल दैट पर्सन, अरे भाभी जी आपने ये जो सब्जी बनाई है ना, आपने जो बिरयानी बनाई है, मैं तो कहती हूँ क्या कमाल बिरयानी बनाई है, लुक एट द अरोमा, पूरा मेरा ना जैसे, मतलब माय होल बॉडी इज फिल्ड विद दैट अरोमा. और टेस्ट तो ऐसा है जैसे मुंह में खाते ही ना इट्स जस्ट बर्स्टिंग, वो टेस्ट ना अंदर बर्स्ट हो रहे हैं. एंड टेक्सचर ऑफ द द राइस and the way you presented it in the tray, उसका presentation देखो, ऊपर से जो आपने garnishing कर दी ना, ये हरे धनिए की and all, ओहो, मतलब कमाल ही कर दिया आपने. This is how you're supposed to do it.
And whenever you are about to say something which is negative, stop at one sentence. तो आज आपने क्या करना है? अभी इनफैक्ट अभी देखो कल और आज में ऐसा अच्छा क्या हुआ आपके साथ, या आपने ऐसा अच्छा क्या देखा या महसूस किया, उसके लिए आपने 5 सेंटेंस लिखने हैं। एंड ऐसा नेगेटिव थॉट या ऐसा नेगेटिव क्या देखा था, उसके बारे में सिर्फ 1 सेंटेंस लिखना। बहुत सारे आएंगे दिमाग में, नेगेटिव तो भर के आएंगे। स्टॉप करना है अपने आप को और सिर्फ 1 सेंटेंस लिखना है। और जो अच्छा हुआ है कल से और आज सुबह से लेकर, anything which you really enjoyed, which you really felt good about, उसके बारे में 5 sentences लिखने हैं। So I'm giving you 2 minutes, just write it please. हमारी जिंदगी में ना पूरा दिन में बहुत कुछ अच्छा होता है और कुछ कुछ अच्छा नहीं भी होता, पर हमारे जो डिफॉल्ट मोड है, जो हमारा प्रोग्रामिंग है, वो सिर्फ नेगेटिव को पिक करती है। अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करके वो ढूंढना है जो आपको बहुत अच्छा लगा। मैजिक वालों सबको पता है, रात को सोने से पहले करते हैं ना मैजिक रॉक प्रैक्टिस। Go through the whole day and see what all good things happened today and pick one which you like the most. तो अभी भी वही करना है, just pick one which you like the most, जो आपके कल और आज सुबह तक में हुआ है। हो सकता है आपने कोई पिक्चर देखी हो जो बहुत अच्छी लगी हो सकता है आप किसी से मिले हो जो जिससे मिलके आपको बहुत अच्छा लगा हो सकता है आपने कोई ड्रेस खरीदी हो सकता है किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो सकता है आपको मिरर में अपनी ही रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी लगी हो, कुछ भी हो सकता है। 5 sentences and use power words. Awesome, wonderful, brilliant, amazing, vibrant. Colors, मतलब ऐसे ऐसे words use करो जो आपको अपलिफ्ट करें, आपके मूड को अपलिफ्ट करें, आपको अंदर से कुछ अच्छा अच्छा सा लगे। नेगेटिव के लिए बहुत सारा दिमाग में आएगा, वो नहीं लिखना है, सिर्फ 1 सेंटेंस में लिखना है नेगेटिव को। हो सकता है किसी ने गाड़ी ठोक दी हो। दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, आपकी खड़ी गाड़ी को भी लोग ठोक जाते हैं। So it could be anything. It could be somebody was very rude to you. It could be आपकी सब्जी जल गई। Anything यार, anything. लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है। जो नेगेटिव हुआ, 1 सेंटेंस, जो अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ, 5 सेंटेंस। डन? Okay, let's move on. So far we have completed 4 steps. Anybody would like to give it back to me? What are those 4 steps? Before we go आगे, ये तो पता चला आगे बढ़ गए। Actually, I've written 6. Good. Very good, very good.
6 मैंने लिखा 6 Yeah. हुआ So, था। so you have to start making this as a habit. Yeah. So I was asking, अभी तक हमने 4 steps complete किए हैं of 7 steps. So anybody would like to give it back to me? What are those 4 steps? पता चले आप लोग कितने attentive हो? You can unmute and speak. Ma'am, one was the physiology impacts your confidence level. Yeah. That is how you feel when you speak with drooping shoulders, and how you feel when your energy, like when you speak with your shoulders up. That is one thing. Then comparing with others, how Yeah. you dress, how your posture is, that impacts a lot of on ourselves as well. Then who the 3 people we admire. Yeah. And That was how about we- comparing. Yeah. Comparing and getting inspired. Yeah. Hmm. Writing about what things that we admire, and stop criticizing yourself. Yeah. That is one thing. And how we should switch words when we criticize. We must immediately stop and switch our words. Yeah. Then second is negative emotions pull us down. Yeah. Yeah. That So is- the first one was physiology impacts our confidence level. Yes. Number 2 was stop comparing Yes. yourself with others. Yes. Third was Stop criticizing. stop criticizing. Yes. And fourth one was negative emotions pulls us down. Pull us down. Yes. Yeah. Yeah. So we have completed 4 steps till now. Yes. So now let's move to the next step. I hope everybody is written. हो गया ना Yes, सबका? ma'am. Great. Yes, ma'am. Okay. So fifth step is taking 100% responsibility of your life. So when I say that, that means stop blaming, criticizing and complaining about your life too, because इसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ. You start taking 100% responsibility of your life. So हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ना आप क्या पढ़ोगे, what will you study, where will you study, what subjects are you going to take, कौन से कॉलेज में जाओगे, आप क्या पहनोगे, आपकी शादी किससे होनी चाहिए, सब कुछ और डिसाइड करता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. अभी तो चेंज हो रहा है, काफी जगह चेंज हुआ है और काफी चेंजेस अभी बहुत जरूरी हैं आनी, है ना. तो अभी क्या होता है कि जब बच्चे 12th पास करते हैं तो पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम टेल देम कि अच्छा इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, है ना, आपके हिसाब से यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ ले लो, ये सब्जेक्ट ले लो, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, ये सब्जेक्ट नहीं मिले तो ये ले लो, कोई बात नहीं, इस कॉलेज में ले लो बस एडमिशन, क्योंकि मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है. एंड सम पीपल हैव दिस प्रेस्टीज इशू. मतलब मेरे को तो इतना हैरानी होती है, लाइक पीपल टॉक अबाउट आई स्टडीड इन ISB, so I want my son to study in ISB because पे डिग्री चाहिए भाई. क्या पे डिग्री, you're not talking about animals. So I've seen this in my own close circle, you know, that they are forcing their children to do something which they don't want to do it, but the decision is made by the others. तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए you have to start taking 100% control of your life. Take feedback, take views and opinions of others. अब सबसे पूछो, सबकी बात सुनो, but make your own decision. अब ये when you take your own decisions, then you have to take charge of your life also.
एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी फेस करने पड़ेंगे. जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो. हम क्यों शाय अवे हो जाते हैं? बिकॉज हम नहीं चाहते कि कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे आए, कि हमें कोई कहे तूने कहा था, तुमने अपने लिए डिसाइड किया था. होता है ना आजकल, जब बच्चों की शादी की उम्र होती है तो आजकल माँ बाप कहते हैं यार अपने आप ढूंढ लो. वाई? बिकॉज देन यू विल नॉट कम एंड ब्लेम अस कि आपने ढूंढ के दी थी, आपने कहा था इससे शादी कर ले. तो सिमिलरली if you start taking control of your life, be in control of your life and trust yourself that you can. That trust will give you that confidence. So if I tell you, मैंने अपनी लाइफ में जब मैं ग्रेजुएशन करी थी उस टाइम बहुत कम कोर्सेज होते थे. I decided what I would like to do after the graduation. I always chose the companies I wanted to work for. Nobody in my family ever influenced me कि तू इस कंपनी में नौकरी मत कर, ये कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले. Nobody forced me because I was very clear कि मुझे करना क्या है. The kind of companies I chose, चाहे वो HCL थी, चाहे वो पेप्सी थी, चाहे वो होंडा थी, चाहे वो स्पाइस जेट भी थी. Every company I chose myself. And what I wear, I decided myself. मैंने शादी नहीं करनी है, it was my decision. Nobody could force me. And I'm standing by it. I have full confidence in myself that I can. And I am doing it. Right? So, आज से आपको एक चीज करनी है, आपको ना किसी चीज के लिए कमिट करना है. क्योंकि ना हम लोग कमिटमेंट से भागते हैं. हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम कमिटमेंट नहीं लेना चाहते. आज आप देखो कितने younger, you know, children are there, they don't want to get married because they don't want commitment. कमिटमेंट से भागते हैं लोग. हम भी भागते हैं. हम लोगों की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे. हम भी कमिटमेंट से भागते हैं. छोटी छोटी चीजों की कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं हम. If I say that from tomorrow I will get up at 5 o'clock, am I committed to it? 2 दिन उठूंगी, तीसरे दिन बोलूंगी नहीं यार आज तो देर सकती हूँ. Why? Because रीजन है, नहीं यार रात को देर से सोई थी. So this commitment is very important. That only will give you that responsibility. Commitment होगी तो आप अपनी responsibility को fulfill कर पाओगे ना. Otherwise, you will always be hiding behind the reasons or hiding behind people to take decisions, and then feel frustrated about it. कि मैं तो ये नहीं करना चाहता था या मैं नहीं करना चाहती थी. They asked me to do it, I did that, and you're feeling so frustrated about it. So start making your own decisions and take control of your life and trust yourself. You can do it. And उसके लिए आपको क्या करना है? एक एक्सरसाइज करनी है आज से 30 दिन तक. Pick one thing which you are going to do every single day. So write it down in your notebook कि आपको 30 दिन क्या करने वाले हो. And keep that word of yours कि मैं ये करूंगी. It could be getting up early. It could be going for a walk. It could be drinking 4 liters of water. It could be dressing up first thing in the morning. Mostly homemakers, you know, they सुबह से तैयार ही नहीं होती, कहीं जाना होता तो तैयार होती हैं. So just take it as a challenge कि next 30 days I am going to get dressed up in the morning itself. और कोई पूछेगा ना कहाँ जा रहे हो? हाँ जा रही हूँ कहीं. How does it matter? You're doing it for yourself. Whenever we are not able to fulfill our word, not able to keep our word, not able to honor our word, what is it that keeps us away from it? Is reasons. और ये reasons क्या है? Reasons हमारे confidence को भी छीन लेता है हमसे. Because जब हम अपनी बात को नहीं कर पाते हैं तो confidence ही नहीं रहता अपने आप में.
right? So whenever we are not able to do it, that means our subconscious mind and our conscious mind is not aligned. क्योंकि 90% 95% तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है हमें, और ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं ये हम कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं कि मैं 30 दिन तक ये करूंगी, तो वो अलाइनमेंट में नहीं है. तो उसको अलाइन करने के लिए यू हैव टू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. या तो आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने अब लिखना है कि आप नेक्स्ट 30 डेज तक क्या चैलेंज ले रहे हो. And I want all of you to share it with me. What is that 30 days challenge you are taking today? And keep your word, keep your commitment. And that commitment will boost your confidence. And you are able to fulfill your commitment. So once you have written, just share. Yeah, I want each one of you to, unmute and speak. May I? Yeah, please. Yeah. So the moment you said about commitment, I was actually thinking and scrolling my mind down कि क्या चीज है जो मैं बहुत दिन से करने की कोशिश कर रही हूँ. So I don't know I shared with you or not. We have Sarup at our house recently from our guru, and I committed myself somewhere that I will be doing my job regularly, which I did not. It's been 3-4 days that I have been just talking in my own mind about it, but I have not completed it. And while sleeping in the night yesterday also, I was thinking that कौन से दिन मैं commit करने वाली हूँ. But all your things, while I was listening, I immediately decided that I'm going to do that for next 30 days. Thank you so much. Welcome. Yeah. Who else would like to share? I want everybody to share, please. Yes, ma'am, I would like to share. Like from last 2 months, I have always been thinking that I should go for a walk, get connected with the nature, but I have never been able to do so. Today also, I was just telling my son that I want to really go out and get connected to nature. I would feel fresh and all. So I have written my commitment down that from tomorrow I will start going for a walk in the morning. That will be my commitment. Great. Do my yoga regularly. 30 days. Okay, great. Yeah, who else would like to share? I want everybody to share, please. Antara? Colonel Saab? Actually, see, these commitments are basically for our own good, our own betterment, our own, ego, our own whatever. But people really, become so casual about it. And in turn, only we suffer. Nobody else is suffering. So the best commitment is anything good, imbibe it. So getting up before sunrise is my commitment. I always get up before sunrise, so I will keep getting up, and then I'm out in the nature, whether I'm playing golf or I'm going for a walk, but I'm out. And I come back only after getting my share of nature with me. Yeah. Great. Thank you. Now, I want to share that I don't want to take extra burden. Like I have a problem of overthinking. So that I'm not going to do. And I'm going to pursue my passion very passionately, whatever I have been doing so far. And I'm not going to overburden myself by overthinking. So that is one thing I'm not going to do. I'm going to stop it. And how are you going to do that? I am going to do that by whenever the thoughts will come, those restricting, that would restrict me, I would just try to keep it away. I will tell myself, no, don't think. वो तो exercise में है ही है. Pick up something which you're going to do it for 30 days. Something which is tangible. जो आपको लगता है कि आप उसको count कर सकते हो कि आज मैंने करा है नहीं करा. Yoga, I'll do. Okay. Great. I'll do. To keep myself calm, meditative mode. Meditation I'll do. Meditation I'm not doing these days. So I need pick one thing which you're going to do, because
if you club it with yoga and meditation, तो एक दिन अगर योगा किया मेडिटेशन का टाइम नहीं मिला तो तुम स्किप कर दोगे कि मैंने योगा तो कर लिया. So pick one. Man, meditation, man. Okay, great. Good. So others, if they have not shared, I'm sure they have written it, and it's for their confidence and their commitment in life. So take 100% responsibility of your life. Yeah, that was point number 5. So now we are moving to point number 6, which is step 6, which is about social confidence and fear of rejection. ये किस किस को है जरा बताना मुझे. फियर ऑफ रिजेक्शन किस किस को आता है सोशली जब आप जाते हो किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में. So मेरे को something everyone faces. Yeah, we all face it somehow or the other, some way or the other. So whenever I used to go for a meeting or something, तो मुझे ये लगता था किसी भी जैसे गेट टुगेदर होती थी एंड ऑल, तो मुझे लगता था मुझे तो समझ नहीं आता बात ही क्या करूं. आई डोंट नो हाउ टू क्रैक अ कॉन्वर्सेशन, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. मुझे नहीं आता मैं कैसे करूं. एंड सो द इजीएस्ट वे टू डू इज कि जब भी आप कहीं जाते हो ना, तो वहां पे ना कुछ कॉमन और जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आम लोग पूछते हैं जब आप किसी को पहली बार मिलते हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आस्क व्हाट डू यू डू, where are you from and what do you do, tell, or maybe tell me something about yourself. अपने बारे में कुछ बताइए मुझे, आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो. So these are the things most of the people ask. जब भी आप सोशल गैदरिंग्स में जाते हो, यू मीटिंग न्यू पीपल, रिजेक्शन सेंस मतलब ये फियर ऑफ रिजेक्शन कहाँ से आता है जब आप नए लोगों से मिल रहे होते हो ना. तो whenever you are in a surrounding where new people are there, so these are common questions which are used to initiate a conversation, which is, tell me about yourself, where are you from, and what do you do. A day before yesterday, I met a couple of people, and that person asked me, so what do you do. तो मेरे लिए भी बड़ा ना कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि क्या बोलूं मैं, because I have not clearly articulated it myself. So I just said I am a thought and emotions expert, and I left it at that. So what you can do is write a small paragraph or answer to these two questions yourself. So I really want you to do it right now. So the question is, what do you do? So I want you to write what do you do का answer लिखो. Because जिस भी mental frame में अभी इस time है, आपका confidence level जितना भी है, just write it right now. And I'll tell you what to do after that. And I'm not going to ask you to share if you don't want to share. It's okay with me. The whole purpose is for you to know how you can boost your confidence. What is it that can give you that access to stand out in a social gathering and don't feel rejected. And guys, please keep hydrating. पानी पीते रहिए साथ साथ. So many times, people find it very difficult to write exactly कि वो करते क्या हैं.
For example, I just said that I'm a thought and emotion expert, but when somebody gives me time to think and put my thoughts together, maybe I'll come out with something much better. Maybe I would come out with something like, I'm an emotional well-being coach and I help women to identify their emotions and overcome them to live a life of satisfaction and fulfillment. Rather than just saying I'm a thought and emotions expert. So अचानक कोई पूछ लेता है तो हम prepared नहीं होते हैं उसके लिए. So the best thing to do is prepare yourself, write about what you do, because this is a very common question people ask. Where are you from and what do you do? And if you are prepared about it, it gives a different kind of confidence when you go and speak to people. Do you think if I had not prepared for this session, I can speak with so much of confidence to all of you? It is because I prepared for it. I have these sheets with me, which I prepared it because I wanted to share it with you and I didn't want to miss out anything. I prepared it. So when you prepare yourself and you go through it again yourself and you modify it, it gives you that confidence when you speak. You can write those 5 beautiful sentences also about yourself, which you've just done the practice in the previous point. Finish up, finish up. Now, once you've written it, after the session, just read it aloud to yourself. मिरर के सामने खड़े होके बोलोगे तो और कॉन्फिडेंस मिलेगा. But then you will know how to stand. कैसे अपने आप को शोल्डर रोल बैक करके चिन अप करके बात करनी है मुस्कुरा के. You can practice that. So speak it aloud. You know, जोर से बोल के अपने आप को सुनाओ. आपको सुनाई देगा कि सुनने में कैसा लग रहा है. अगर नहीं लग रहा अभी भी आपको लग रहा कि it is not very impactful, maybe you would like to redo it, rewrite it again. And उसके बाद दोबारा बोल के देखो and just check, is that person sounding confident? जो बोल रहा है, is it that person coming across as a confident person? Is that person coming across that that person knows what that person is doing? या कुछ भी मम्बल कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी कहने की कोशिश कर रहा है पर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. क्या उसको क्लियरली पता है वो क्या कर रहा है? So you can always tweak it a little bit again, and then you see how is it coming across now? Are you coming across as a confident person? And then keep that script with you in your mind all the time. Anytime you're meeting somebody, you know what to say. And the first time when you're able to break that ice and able to communicate that, confidence वहीं बन जाता है.
और हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाता ही शुरू में है, बीच में कभी नहीं डगमगाता. Because the moment we start the conversation, उस टाइम पे अगर कॉन्फिडेंस हमारा हिल गया, no matter what you do after that. So this introduction about yourself is very important to overcome that social anxiety of or social confidence ka issue. Right? Now I'm going to talk about the rejection part of it. Social rejection की बात कर रही हूँ मैं, social gatherings में. Many times it happens na, that आपने enter किया and you see group of people standing and talking, and you want to just go and enter that group and talk to them. माना आप वहां पर गए and you're very smiley and all, you want to just go and say hello to everybody and all, but nobody is paying attention to you. And what is the interpretation you're making at that time? Because rejection ना कभी भी real नहीं होती है. Rejection कभी भी real नहीं होती है. Rejection is always a perception, a point of view, or an interpretation. You entered and you wanted to say hello to everybody, but people were busy. Maybe there was some argument going on. They didn't want anybody to hear that, and they just stopped talking and they were just looking at each other. And what did you make out of it is that I am not good. There's something wrong with me. And you feel rejected. So always remember this. Rejection is never real. It is your interpretation of the situation, of the circumstances. आपको नहीं मालूम वहां क्या चल रहा था. I remember I was coaching this girl from Canada, and she's telling me there was a social company का कुछ meeting चल रहा था and all, and she happened to cross her manager. उसको अपने मैनेजर के पास से निकल के गई तो उसको सुनाई दिया का मैनेजर किसी से बात कर रहा था. नहीं, that's not the issue. She just got lucky. I mean, I know her capabilities and all. And she felt it was about her. And she had a sleepless night. कि मेरा तो मैनेजर ही खुश नहीं है मुझसे. I'm not good enough. Confidence कहाँ गया? नीचे. Self esteem कहाँ गई? नीचे. क्या उसके बारे में था वो? No. It was her perception. It was her interpretation कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. And she felt rejected. And she felt there's something wrong with me. And we all go through that. Some point in time in life, we have all gone through it. और वो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा. होगा. But now since you know it's not for real, you can check that it is your point of view, or this is your interpretation of the situation. Do you think it's going to help you to overcome this social rejection kind of issue? Yeah, it will. Definitely it will. It has helped me many times. When I was working in office, many times it happened that, my boss is talking to somebody and I just crossed and she looked at me and she's talking to somebody and I felt as if she's talking about myself, about me. She was talking about me. And somewhere I used to feel, मैंने कुछ लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, I'm not good. I've done something wrong. So I have gone through myself. ये है ना ये बहुत ओवर टाइम काम करता है.
ओवरड्राइव में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे अभी अंतरा कह रही थी ओवर थिंकिंग, तो ओवरड्राइव में रहता है हमारा दिमाग, तो उसको वापस पकड़ के लाना होता है। सो पकड़ के लाने के लिए these tools will help you, बट काम तो खुद ही को करना पड़ेगा ना। I can only tell you, I can give you tools, but अप्लाई तो आप ही को करना है ना। As we say, knowledge is treasure, but what is the key? Implementation. Unless you practice it, unless you implement it, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। 2 घंटे यहाँ बैठ के जाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। इस 7 स्टेप्स में से अगर आपने एक स्टेप ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, your confidence level will definitely go up. That is my guarantee. लिख के देती हूँ, करना आपको पड़ेगा। Right? Now is the time for exercise. आपकी एक्सरसाइज ये है, नंबर 1, 2 एक्सरसाइजेस हैं। नंबर 1, for 1 week, आज से लेकर कल से कर लेना, संडे से कर लेना, संडे टू सैटरडे, every day you will have conversation with 3 strangers. कोई भी हो सकता है, रिक्शे वाला हो सकता है, कैब ड्राइवर हो सकता है, आपका किराने वाला हो सकता है, आपका सब्जी वाला हो सकता है, या anybody, or you meet somebody socially or anybody, but 3 strangers, उससे आपको बात करनी है और उससे वही क्वेश्चंस पूछने। सिंपल है, आपको सिर्फ कॉन्वर्सेशन को शुरुआत करनी है और स्ट्रेंजर्स से जाके बात करनी है। भैया आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? सब्जी बेच रहा है तो ऑब्वियसली सब्जी बेच रहा है, बट आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार में कहाँ से आए हैं? अच्छा, वहां से आए हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? सम कॉन्वर्सेशन विद 3 स्ट्रेंजर्स एवरी सिंगल डे। आपको नहीं मालूम ये सिंपल एक्सरसाइज आपके कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ाएगी कि आप सोशली कहीं पर भी जाके बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं। आपको लग रहा होगा ना ये सब्जी वाले से और ये कैब ड्राइवर से या ऑटो ड्राइवर से या रिक्शा वाले से बात करके क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। इट्स गोइंग टू ब्रेक सो मेनी ऑफ योर बैरियर्स जो आपको जकड़ के बैठे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, पकड़ के नीचे खींच के बैठे हैं। सो स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट 1 week. कर पाओगे ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? 3 strangers every single day. I'm also going to do. मैं भी करूंगी। And I'm going to love it because मुझे तो वैसे ही लोगों से मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं वैसे भी ऑटो वाले से, कैब वाले से बात करती ही करती हूँ। But from today, I mean from tomorrow, today itself, why not today? आज से ही I will speak to 3 strangers. I will strike a conversation with them so that I get that confidence कि मुझे सोशल गैदरिंग में कहीं बोलना पड़े तो मुझे हिचकिचाहट ना हो, मुझे वो कॉन्फिडेंस हो। एक्सरसाइज नंबर 2, वो 3 लोग होंगे ना जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, इंस्टाग्राम पे होंगे या लिंक्डइन पे होंगे या यूट्यूब पे होंगे, क्योंकि आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है। या हो सकता है आपके सर्कल में हो कुछ लोग, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके एसोसिएट्स हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 3 ऐसे लोग जिनको आप एडमायर करते हो, you have to write or send them an audio message. या तो ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या वीडियो मैसेज उनको आपको भेजना है। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, फेसबुक पे कर दो, लिंक्डइन पे भेज दो, ईमेल भेज दो, बट आपको, या अगर व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे भेज दो। आपने उनको एक एप्रिसिएशन का मैसेज भेजना है
और उसमें क्या बोलना है आपने कि आप उनमें क्या क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हो और आपकी लाइफ में उसका क्या असर हुआ है, उस क्वालिटी का, उनसे आपने क्या सीखा है अपनी जिंदगी के लिए। हो सकता है आपको हिचक आए लिखने में, हो सकता है ऑडियो मैसेज भेजने में हिचक आए, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. This will help you to get over the fear of rejection. हो सकता है वो आपको जवाब भी ना दे, एक्नॉलेज ही ना करें कि उनको मैसेज मिला है, बट इट्स ओके, बट यू स्टिल विल फील हैप्पी. वो मैसेज भेजने के बाद आपको एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगी और आपको खुशी महसूस होगी. एंड वो कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे कैसे काम करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. सो 3 ऐसे लोग जिनको आप एडमायर करते हो, इंस्टाग्राम पे भी हो सकते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या कोई मतलब हो सकता है ऐसा, जिनको आप बहुत हो सकता है आपके बिजनेस में ही कुछ लोग हों जिन्हें आप बहुत एडमायर करते हो, आपके सीनियर्स हों, आपके अपलाइनर्स हों, कुछ भी हो सकता है, जिनको भी आप एडमायर करते हो एंड यू वांट टू कम्युनिकेट दिस टू देम कि हाउ दे हैव इम्पैक्टेड योर लाइफ. उनको अप्रिशिएट करते हुए वो भेजना है मैसेज. ठीक है. सो दिस वाज योर असाइनमेंट. अब आ गया हमारा स्टेप नंबर 7. सो स्टेप नंबर 7 इज worrying about what will people say. सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग. ये हमारे कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से बैटल करता है, इतनी तरह से मारता है ना हमारे कॉन्फिडेंस को कि पूछो ही मत, और हमें पता भी नहीं चलता कि इट इज इम्पैक्टिंग आवर कॉन्फिडेंस. या टेल मी, व्हाट आर यू वरीड अबाउट. क्या हो जाएगा अगर कोई कुछ बोलेगा, तो क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में. सो आई वांट यू टू राइट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस राइट नाउ. व्हाट आर यू वरीड अबाउट. किसी भी एक सिचुएशन को लेके अगर आप वरीड हो कि लोग क्या कहेंगे, आप कुछ करना चाहते हो, बट यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ बिकॉज व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया, so I was shying away from posting the ads every day. I mean, post every day. मुझे लगता था एक बार कर दिया ना, बार बार करेंगे तो लोग कहेंगे पागल है क्या, इतना क्या है, इसको बार बार डाल रही है. बट आई हैव सीन पीपल पोस्टिंग इट एवरी सिंगल डे. तो मेरा क्या कॉन्वर्सेशन था, लोग क्या सोचेंगे कि ये रोज रोज क्यों डाल रही है. हो गया ना, पता चल गया प्रोग्राम कर रही है. बट आई वेंट बियॉन्ड दैट, और मैंने उसको किया. मैंने एवरी सिंगल डे पोस्ट डाली है उसके बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में डाली है ना, आप सबने देखी है. दैट इज हाउ यू आर हियर. या सो अगर व्हाट आर यू वरीड अबाउट वो लिखना है आपको. उसके बाद लिखना है कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट. लाइक आई फेल्ट दैट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट इज दैट आई कैन स्टिल पोस्ट इट, सो आई पोस्टेड इट. तो आप जिस चीज को लेके चिंता कर रहे हो कि लोग इस बारे में क्या कहेंगे, अगर आपको कोई ड्रेस पहनने का मन कर रहा है और आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, तो कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट. कैन यू wear it in front of people who appreciate it, or avoid wearing it in front of people who don't like it. I don't know, it could be anything. I'm just giving an example. अब मुझे नहीं मालूम आपका कौन सा एरिया है जिसमें you're worried के लोग क्या कहेंगे. So the only thing you need to check is can you do anything about it. And if you can do it, then go ahead and do it, na, like I did.
I felt I can do it, and I just went ahead and did it. ना मैंने डाल दिया post. So similarly, whatever you're worried about, उसके बारे में क्या आप कुछ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कर लो ना. Don't get stopped. So once you've answered this question, I'll move on to the next one. Now, since you are in that momentum of thinking about that, कि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो next question is, what is the worst case scenario? बुरा से बुरा क्या होगा? Worst case scenario क्या हो सकता है इसका? Just write that. कि worst case क्या हो सकता है? तो worst case क्या हो सकता था मेरे लिए? लोग नहीं आएंगे, बोलेंगे बार बार डाल रही है, देखेंगे नहीं उसको. Okay, fine. Now, if that is the worst case, can I prevent it? If I can prevent it, how would I do that? Worst case scenario को सोचो, फिर सोचो कि इसके बारे में क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ. Is there anything I can do to prevent it from happening? जिस चीज को लेके आप worried हो के लोग क्या कहेंगे. And if you can do it, how are you going to do it? जब आप ये सब लिखोगे ना, आपकी जो वरी है ना वो वैसे ही इवेपोरेट हो जाएगी. आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा उसका. होता है ना, दूध का दूध पानी का पानी, दिख गया सब आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या मेरे कंट्रोल में क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. जो कंट्रोल में है उसको कर लो, जो कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दो. या बट डोंट वरी अबाउट इट कि लोग क्या कहेंगे, एंड डोंट गेट स्टॉप्ड बाय दैट, because once you know the clarity is there, action emerges. And once you start taking action, confidence goes up. I can face it. अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कैसे करूंगी, ऐसा हो गया तो कैसे करूंगी. बट नाउ वी नो ऐसा होगा तो क्या करना है, पता चल गया. एंड यू डिसाइडेड, अच्छा ठीक है ये है तो ठीक है, मैं कर सकती हूँ, कर लूंगी, नहीं कर सकती छोड़ो. Worrying will go away, because the more you worry, the more your confidence goes down. Like Antara was sharing, overthinking करती है. So when she is doing overthinking, what is she doing? She's worrying. Whenever we are doing overthinking, we are imagining worst case scenario already. That is what is called overthinking. क्योंकि हम उसी के बारे में सोच रहे थे, क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया. So we are actually thinking of the worst case scenario. तो जब आप ऐसे सोच रहे हो तो कॉन्फिडेंस है क्या आपके पास? नहीं है ना. और उस टाइम पे आके अगर किसी ने आपको जरा सा भी कुछ कह दिया तो क्या होने वाला है आपको पता ही है. But that doesn't mean that you have to live in isolation. We are social animals. Human beings are social animals, right? अकेले में रह के तो रह ही नहीं सकते ना हम. याद है ना सबको, जब लॉकडाउन हुआ और
कर्फ्यू लगा था, कैसे हम तरस गए थे एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, था ना? वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट। तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं गया है टाइम। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट? So we don't want to live in isolation. So we have to connect with people. जैसे मैंने बोला, आप 3 स्ट्रेंजर से रोज कनेक्ट करना है, that is connecting with people, right? Breaking that ice, connecting with people, and that needs courage, ना? All this work which we are doing today, and जो मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको अपनी लाइफ में जाके करना है, needs courage. Courage only gives you confidence. Without courage, confidence नहीं आने वाला है. Courage तो चाहिए ही है, right? तो करेज चाहिए लोगों से कनेक्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोगों से बात ही नहीं करते, तो लोगों की तरह आंखें मिला के बात नहीं करते। अगर कोई बात भी करता है तो नीचे आंखें झुका के उनको उनसे कुछ मंबल करके जवाब दे देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एंड नाउ सिंस वी नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, हमें कॉन्फिडेंस है तो स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल ना। Because it says what is your network is your net worth. अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका जितना नेटवर्क है उतना ही आपकी नेटवर्थ है। एंड वी आर डीलिंग विद पीपल ऑल द टाइम। लोगों से ही तो मिलते हैं हर टाइम हम। एआई आने के बाद भी लोग बात क्या करते हैं? इमोशंस की बात क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स की। बिकॉज दैट इज द मेन connection of people. Start connecting with people. Stop judging yourself and stop judging others. Connect तभी कर पाओगे। अगर आप पहले से जजमेंट लेके जा रहे हो किसी और के बारे में कि ये इंसान ऐसा है, तो कनेक्शन बनने नहीं वाला। अगर आपने ये सोच लिया दिस पर्सन इज वेरी स्नूटी, तो बहुत ही प्राउड है, इतना एरोगेंट है कि कुछ कहने की हद नहीं, तो आपको लगता है उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे? कोई चांस नहीं। सो स्टॉप जजिंग पीपल। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो हमारी ना इवनिंग में क्लासेस होती थी। तो हमारे क्लास में दे यूज्ड टू बी अ लेडी, we all were in executive, we are all doing executive MBA from IIM Lucknow. तो हम लोग in class होती थी नेहरू प्लेस में, and online distance learning होती थी, and there was this lady who was very accomplished today. She's very senior person in very good organization today. And when she used to come na, she used to dress up like हमने उसका नाम डाला हुआ था चम्मक चल्लू. So she used to dress up very weirdly according to us, क्योंकि we were judging her. हमारे हिसाब से वो क्या पहन के आती है यार, कभी घाघरा पहन के आ जाती है, कभी इतने एंकलेट्स पहन के आ जाती है, कभी यहाँ घुंघरू बांध के आ जाती है। What kind of dressing sense is that? Nobody could connect to her. Though she is at a very high level today and she's very sophisticatedly dressed today and maintained her health and her figure and everything today. And when I see her on the Facebook, I really admire her. But what I'm saying is we could not create that connection with her. None of us. There were 30 of us in that room. I think 30, 35. Nobody could connect with her. Because judgment थी ना उसके बारे में. So stop judging people. Only then you can connect. And powerful people have powerful connections. सुना होगा ना? तो मैंने ये लैंडमार्क में सुना था that all powerful people have powerful connections, powerful relations. तो वो build करने के लिए start connecting with people. अब जब कनेक्ट करना है लोगों से, तो कैसे लोगों से साथ कनेक्ट करना है? सबको तो नहीं ले आना ना. We don't want everybody to be in our life.
There are people who deplete our energy. Toxic लोग भी तो होते हैं ना जिंदगी में हमारे, जो हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे खींचते रहते हैं. क्या बन के आती, क्या बोलती है. There could be people who could be judging me for this session. What kind of a session is this? कैसे बात कर रही है? She is not even able to articulate herself. People will be judging me. And do you think they are good for my confidence? No, not at all. I would not like to have such people around me. Feedback is welcome. But if somebody is trying to pull me down, I have a very dear friend. I mean, I would not like to take the names, but she's a very dear friend, and she's been with, I've been good friend with her for the last, I think, 15 years. But she has this habit. She will always pull me down. Whether it is my dress, whether I say something, she has to comment. But then what are you supposed to do with such people? Distance, maintain a distance. And surround yourself with people who boost your confidence. There are people who believe in you even before you believe in yourself. For that matter, I would like to say Geeta. Geeta believes in me, even though I don't believe in myself. Surround yourself with such people who are good for your confidence, who are always encouraging you, who are always trying to build your confidence. And try to avoid such people who actually are depleting your energy, pulling you down. हमारे अपने घरों में ही ऐसे लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे लोग होते हैं. So today I want you to do this exercise. Make a list of people who are motivating you, encouraging you, and believe in you. It could be, somebody who met somebody somewhere. आप अचानक कहीं किसी को मिले, आपने उनके साथ कुछ कॉन्वर्सेशन किया, but that person was so आपसे मिलके उसको बहुत अच्छा लगा और उससे मिलके आपको भी अच्छा लगा. So maintain those kind of contacts. Go a little extra mile to stay in touch with such people. ये नहीं कि एक बार मिल लिया तो चलो ठीक है, अच्छा तो लगा था उससे मिलके. Surround yourself with such people. Meet such people. Call such people. Go on vacation with such people. Go for a coffee with such people. Because unke saath, as we call it, it's powerful associations. When you sit with such people, you feel motivated, you feel encouraged, you feel a boost of confidence. And also make a list of people who are depleting your energy. हमको ना पता नहीं चलता है कि हमारे आसपास कितने लोग हैं जो हमें नीचे खींच रहे हैं और कितने हैं जो हमें बूस्ट कर रहे हैं. पता रहना बहुत जरूरी होता है ताकि आप उनको फिल्टर आउट कर सको. फिल्टर्स लगाते हैं ना हम आजकल, तो हर सोशल मीडिया के हर ऐप पे, हर जगह पे फिल्टर्स हैं. So you can select people you want to meet. So you can select people you want to interact with. You can select people you want to send your post to. So similarly, select people in your life also. Filter them out. तो उसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन हमारे कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है और कौन हमारे कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है. बुरा नहीं कहूंगी, अच्छा नहीं है. So this is your assignment. You have to write these names. और जितनी बार आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है, ऐड करते जाओ उसको बीच में. और जब आपको किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको भी ऐड करते जाओ टॉक्सिक वालों में. Other than people also, there are other elements which impact our confidence.
One is nature. जैसे अभी Almas was talking about connecting with nature. Kanasa was talking about connecting with nature. Every time I go for a walk, when I am in that surroundings, natural surroundings, मेरी चाल बदल जाती है. I don't walk with my head down. I walk with my head held up. And I have a smile on my face. What are these signs? Physiology के हिसाब से, I'm confident. So nature is one element. Then words. हमें कुछ कोट्स बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? कुछ कोट्स हमें बहुत इंस्पायर करते हैं. तो जहां रहते हो, जहां बैठते हो, उसके आसपास अपने ऐसे कोट्स को प्रिंट आउट करके लगा के रखो. अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा के रखो. अपने घर पे जगह जगह लगा के रखो. You get such. I remember that when I was in college, तो जनपद पे ना अभी भी मिलते हैं वो, जनपद पे और सीपी में. There are these people who are sending those posters. I remember I had brought that footprints car poster from there, and I gifted posters to my friends. उस टाइम पे ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती थी जो हम गिफ्ट करते थे फ्रेंड्स को, but very very meaningful things we used to gift. Whenever I used to give them jewelry or purses or something, we just used to give things which will help them grow in life. वो उस टाइम का थॉट प्रोसेस ही वही था, माइंडसेट ही वही होता था हमारा. सो आई रिमेम्बर वो पोस्टर्स मिलते हैं अभी भी, आज भी मिलते हैं सीपी में. मैंने कितनी बार देखा व्हेन वी आर जस्ट walking in the inner circle and all. There are these guys who are sending those posters. Put those posters around you, colorful one with nice beautiful quotes on it, so that you feel vibrant, you feel confident. Yeah, so this is another thing. And third thing is declutter your environment. जितने आपके आसपास, आपकी कबर्ड में, आपके घर में, जितना आपके आसपास क्लटर होगा ना, आप उतना कॉन्फिडेंस फील ही नहीं कर सकते. आपका दिमाग ही क्लटर्ड रहेगा. मैं ना बहुत दिन से अपने स्टडी टेबल पे, काफी टाइम पहले की बात है, I was not doing much, was not well, so I left it as it is and all ना. तो इस पे जब बहुत सारी चीजें ना पाइल अप हो गई, because I have so many registers जिसमें मैं लिखती रहती हूँ ना. मेरे तो बहुत नोट्स बनाती रहती हूँ, तो I have around 10 registers on my table and all that. तो वो ना सब पाइल अप हो गए. Everything was cluttered. And मुझे किसी ने बोला एक वीडियो बनाने के लिए. I just couldn't think straight. I was not able to put my thoughts together. Otherwise मेरे को वीडियो बनाने में, मतलब मुझे वीडियो बनाने में 5 मिनट नहीं लगते हैं. जितने भी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ ना, I don't prepare, I don't write a script. I just switch on the camera and I just speaking and I just post it. I just get it edited and post it. But I just couldn't put any thought in my mind. मुझे समझ ही ना है मैं क्या करूँ. मैं सबसे बोल रही हूँ, मैं I was talking to a couple of my friends. पूरन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे वीडियो बनाना है, मेरे को कुछ थॉट्स ही नहीं समझ आ रहे, मैं क्या बोलूंगी, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं. इसे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. Just think about it, think about it. And then suddenly I saw my table. It was totally cluttered. So I just, मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, दूसरी तरफ रखा and just cleared the space. अब मैंने एक सारा स्पेस क्लियर किया, and after that it just took me 10 minutes to make the video. Everything just came crystal clear in my mind कि मुझे क्या बोलना है. So declutter. आपका environment भी आपको बहुत impact करता है. आप अब अपनी कबर्ड में देखोगे ना कि सामान, कपड़े भरे पड़े और आप ढंग से लगे नहीं हुए हैं, आप खोलोगे ना, it's not going to give you any confidence. It is going to pull your energy down. We all are energy being, right? हम तो एनर्जी है ना सारे, तो वो एनर्जी को हमारे नीचे ले आती है. So आसपास अपना environment. As I said, when you are connecting with people, people are important for your confidence. So is your environment.
So start decluttering. So I'm going to declutter my cupboard today. And I'm going to give away at least 5 of my dresses. That is my promise to you all. So you also, because it's a weekend, you can declutter. And don't keep hoarding things. हमें ना आदत होती है कपड़े रखते रहेंगे, चीजें रखते रहेंगे, आज नहीं तो कल यूज हो जाएगी, आज नहीं तो कल यूज हो जाएगी। 1 साल से मैक्सिमम 2 साल से, if you have not used it, it's not required. Just give it away. Make a list of areas of your house which you are going to declutter. One by one, do it on a weekend and start doing it. That will give you a boost of confidence, because the more cleaner the space, the more cleaner the mind and the more confident you are. So this is what I have for today. And इसके बाद हमारा एक meditation था. अगर आपको चाहिए तो हम वो meditation कर लेते हैं. अगर नहीं तो मैं आपको group में share कर दूंगी, because I think our time is over. And in case you have any question, you can ask me. That is more important. Meditation I can share in the group also. Anybody has any question, you can ask me. Actually, I have no question, but I have only one submission. That everything that is happening with you or in your life starts with you. So if you keep working on yourself, things will keep improving. You see, this is what the nutshell, what you said. Absolutely, absolutely. And stop playing blame game. Take full responsibility of yourself and your life. Absolutely. Thank you so much, Kanna sir. And one more sentence, last sentence. You see, we are all here to enjoy life. So if you're enjoying life, you're good. If you're not enjoying life, there's something wrong with you. So keep that thing in mind. Wherever you are, we are all here to enjoy life. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. I want everybody to say something. Thank you, sir. Yeah, Antara. Ma'am, as you said that, we are social animals, we cannot live in isolation. So I have just something to add here. Like, I think not isolation, but at some point of time in our lives, we need to take a break from social media, a break from people around, just to spend some me time with oneself. I think I believe in it, and sometimes I just focus on myself. Sometimes I purposely I tend to deactivate my social media profile, and I'm not so much active on Instagram also. Sometimes I give few posts on Facebook, you have also seen, but I'm not a very social media person. But sometimes I think we all need a break, because continuously when we are checking out other posts on social media, that creates an impact automatically, whether we want or not want. It happens. So sometimes I think it is not bad to keep oneself a little break from the society and around, and just spend some quality time, me time, just to explore oneself, to self-actualize oneself. I think I believe in this, and it works actually for me. Definitely. Then again, I get back. Yeah. So that is the reason you are spending these 2 hours on yourself. Absolutely. This is your me time. And Me time, definitely. Absolutely. Definitely. Yes. Yeah, we all need me time, but after the me time, we start craving for the people around us. Yes, exactly. And sometimes, it is, as I said, strangers are much more welcoming. Yes, yes. So when you're craving for people's attention, people's, कहते हैं ना उनका सानिध्य चाहिए होता है. So when you're looking for that, then look for people who are actually good for your confidence, your growth. Yeah, that's it. Thank you so much. Yeah, I want everybody to share how was the session for you. Should I go first? Yeah, Geeta, please. Yeah. So it was wonderful. I could pick up 2-3 very, very important things which I was missing on. What is one thing that was commitment part. Second thing, what got reiterated in my mind, Jagjit, was what do? We need to be prepared with.
I think this is one thing where maybe, you know, when I work with people, it is gonna help me a lot to at this point where, you know, confidence can immediately shoot up if we are prepared, if we are ready with the answer, what we do. I think this is a very important part to be added in any time when we meet someone, which I think I did not even think of how to put it in words. I think you gave words to it. What I was, you know, I'm going to add it. I know where I have to. Second thing, you know, you said talk to 2-3 strangers. I think I really, really believe in that. I have some beautiful experiences doing all this exercises. And I believe something else, that universe works through people. And the experiences when we talk to strangers, हमें realize भी नहीं होता कि they are meant for us. हमें कुछ मिलना था उनसे बात करके, which we misses on if we don't talk to people, if we don't expose ourselves. Yeah. So I really believe in that, not to miss out on those experiences and talking to strangers, whoever it be, without judging. You know, whether it is rickshaw wala, मैंने शायद ऐसी कभी कोशिश नहीं की कि किसी you know, ऐसे इंसान से पूछ के उसकी story. I think it can be very, very comforting, you know, for these kind of people to talk, to give a while. I think this is one thing that we can give to people is our time. And I will definitely work on that. And thank you so much for a beautiful session. There were so many tips and they were practical and real, I felt. You know, there are a lot of things that I keep on taking from coaching sessions. I think I write it down somewhere, but I maybe don't implement all. But I found some very important things which I really can implement. It's becoming so easy for me. And decluttering is the last thing I would take. And I really, really am thinking of decluttering, you know, my Almira, you know, and I'm not able to do that. I'm going to do that today itself. Thank you so much. You're welcome. Thank you so Okay, much for good. sharing that. Very nice. Is that all you have to say? No, I follow a lot of things. No, it's very, very wonderful. I learned a lot of new things. Lot I follow. I've known you for too long, so I know all this. But there are so many things which I shared today which I was also not aware of. Okay. Actually, it was a golden opportunity to spend some quality time with the quality people. Yes, That's that's one thing. You put it Because I'm correctly. just seeing the strength of the people who are here. They are really, you know, very serious about life and they're very serious about each other. That's very important. True. One thing I would like to add here, one thing I would like to add here, when Jagjit said that you should stick to people, you should make a list of people who actually boosts our confidence. I think this is also a choice to be here with people who actually want to boost our confidence. You know, this is just a choice every day. And one thing that works for me every time, I'm just sharing with everyone, is sticking to people who actually empower me. And, you know, snatch करने की जरूरत है. You know, उनके साथ टाइम, उनके साथ कुछ पल स्नैच करने की जरूरत है. और हम कभी वो नहीं, जो मैं कभी नहीं करती थी. I think this has changed my life forever. And now I make it a point, because everything, I'm not elevated in my own self. I take everything. I took everything from all of you today. So thank you to all of you. And thanks to myself that I chose to be here today. Thank you, Jagjit ji, from all of my heart. Thank you. Thank you so much. I would also like to share, it was a wonderful session. Lot of learnings. Stay committed. Don't think about लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, अपना काम करते रहो. और तीसरी चीज़ है कि stay away from people who, you know, try to take away your energy. Stay away from them. Make good friends and ask about their well-being. Speak to strangers. That is one of my negative points. Speaking to strangers is a bit difficult task, but yes, I will do that. And secondly, I had spoken to a couple of my friends also. I had to give them reminders actually today, but I will do that if they are able to join from tomorrow, one or two of them. I'll speak. Yeah, so this session was only for today, and I'll be coming out with this again.
Yeah, I'll be doing this more often. If you people find it beneficial, then maybe, after your feedback, I will repeat it. And the other thing I just want to tell you, the people who have been with me earlier, that I'll be soon starting with the magic session also. Right? Yes. Okay. So thank you very much. It was so wonderful. And thank you for your listening. आप लोगों ने 2 घंटे मुझे सुना है. कोई किसी को इतना time देता नहीं है. And I'm so blessed to have all of you in my life. And you all have contributed to me today. And I'm not the same person who started the session. You have also contributed a lot in our lives, ma'am, to make a change. Yes. And prior to 2020, all of you were strangers, but now you people have become very close to my heart. Darshan sir, you, Puran sir, all of you are so close to my heart. So, strangers have become family for me actually over the years. Like after post-COVID, I think I'm very close to stranger than that of my relatives, whom I have known since childhood. So this has happened with me, and that's true. Yeah. So great. Thank you so much. And enjoy rest of your day. And do exercises, don't forget to do them, because they are for they are for you, not for me. I'll do mine. Yes, to do yours. And we will catch up some other time on some other platform. So bye. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Thank you.